everyone. This is Dr. Mrinalini Sharma, and today we were doing the first YouTube live session of 2023, and we're going to speak on my favorite topic, something to do with the nose job or rhinoplasty, as we call it. So today we're going to discuss something different from the routine discussions we have. Today we're going to talk about rhinoplasty versus septoplasty. So many people confuse these two surgeries. So the rhinoplasty जो है वो totally अलग चीज है. Septoplasty is a part of rhinoplasty. So when we're talking about rhinoplasty, उसके बहुत सारे forms होते हैं. There are a lot of indications in which we do a rhinoplasty. उसके reasons functional भी हो सकते हैं, उसके reasons cosmetic भी हो सकते हैं. And depending on the kind of nose a person has, rhinoplasty can involve a lot of techniques. When we talk of a septoplasty is a very specific term which is used for a surgery performed in cases where a person has something called a septal deviation. So basically when we say septal deviation, उसका मतलब ये है कि पेशेंट की एक जो नाक की हड्डी होती है जो नाक को दो हाफ्स में डिवाइड करती है, दिस इज कॉल्ड द सेप्टम. ये पोर्शन जो है ये टेढ़ा होता है कुछ लोगों में, एंड दैट इज द रीजन द पर्सन चूजेस टू गेट अ सेप्टोप्लास्टी. एंड उसके क्या सिम्टम्स होते हैं कि जब व्हेन यू हैव अ डिविएटेड सेप्टम, जो सेप्टम टेढ़ा होता है उसकी वजह से पीपल हैव सम प्रॉब्लम्स. So the commonest symptom which a person comes to me when he or she has a deviated septum is that the person has difficulty breathing from one side. So the patient will say कि डॉक्टर मुझे इस साइड से तो अच्छे से ना, सपोज राइट साइड से अच्छे से सांस आती है बट लेफ्ट साइड से मुझे सांस ठीक से नहीं आती है. इसका कारण ये होता है कि नाक की जो सेंट्रल डिवीजन होती है, जो बोन एंड कार्टिलेज होता है, जो नाक को हमारे दो हिस्सों में डिवाइड करता है, वो टेढ़ा होता है. सो जिस तरफ उसका बेंड होता है, इट इज यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ एन एस और अ सी. तो आप इमेजिन करिए कि जो चीज ऐसे सीधी होनी चाहिए थी वो आपकी इस तरफ को बेंड है. सो ऑब्वियसली इस तरफ की जो ओपनिंग है वो छोटी हो गई है, इस तरफ की ओपनिंग बड़ी हो गई है. तो जिस साइड की तरफ काटले वो आपका जो सेप्टम है वो बेंड है, उस साइड का एयरवे छोटा हो गया है, वहां से आपको सांस लेने में दिक्कत आएगी. सो सेप्टोप्लास्टी जो है इस टेढ़े सेप्टम को बेसिकली दोबारा रिपोजिशन करके सीधा लाने की सर्जरी है. एंड इसकी जो कॉज होता है, द रीजन फॉर गेटिंग अ सेप्टोप्लास्टी डन इज यूजुअली फंक्शनल, इट्स नॉट कॉस्मेटिक. सो द पर्सन विल से कि आई हैव अ डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग एंड फॉर दैट रीजन आई वांट टू गेट अ सेप्टोप्लास्टी डन. हो सकता है कॉस्मेटिकली उसकी नाक में अदरवाइज कोई प्रॉब्लम ना हो. दो most septal deviations will have some kind of a deviation in the shape of the nose. अब septum deviation जो है बहुत अलग अलग types की होती है, बहुत अलग अलग categories की होती है. So I won't go into all those details and bore you. But many of the septal deviations are accompanied by a deviation in the nose. So जिसका septum टेढ़ा है उसकी नाक भी बहुत cases में 80% cases में नाक भी टेढ़ी होगी. So cosmetically also the person will present with a crooked nose or a deviated nose. So when we talk of septoplasty, जो basic aim होता है वो ये है कि सेप्टम को फिर से सेंट्रलाइज कर दिया जाए, सीधा कर दिया जाए, जिससे कि पेशेंट की जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाए. नाउ लेट्स कम टू राइनोप्लास्टी. जब हम राइनोप्लास्टी की बात कर रहे हैं तो राइनोप्लास्टी जो है वो एक ऐसी सर्जरी है जिसके इंडिकेशंस अलग अलग हैं, जो अलग अलग सिचुएशंस में की जाती है. सो सम पीपल विल गेट अ राइनोप्लास्टी डन बिकॉज उनकी टिप बहुत मोटी है, या फिर उनका जो ये जो नेजल ब्रिज है ये या तो बैठा हुआ है बिल्कुल ही, या बहुत ज्यादा उठा हुआ है. पेशेंट को हम्प है, हम्प का मतलब है कि यहाँ की हड्डी बड़ी हुई है. सो अ हम्प और डिप्रेशन इन द नोज, और से द टिप इज वेरी ब्रॉड, या फिर किसी के नॉस्ट्रल्स बहुत ब्रॉड है. पेशेंट्स बहुत बार मुझे आके कहते हैं कि डॉक्टर जब हम मुस्कुराते हैं तो हमारे नॉस्ट्रल्स और ज़्यादा बड़े हो जाते हैं. या फिर आप चाह रहे हो कि जो आपका जो नेजल टिप है वो और ज़्यादा फाइन हो जाए. इन सब इंडिकेशंस के लिए यूजुअली राइनोप्लास्टी की जाती है. अब सेप्टोप्लास्टी जो है वो बहुत सारी राइनोप्लास्टीज का एक इंटीग्रल पार्ट होता है. सो बहुत सारी राइनोप्लास्टीज में हम सेप्टोप्लास्टी भी करते हैं बिकॉज एज आई सेड many patients come to us with a deviation in the nose
नाक जो है वो टेढ़ी होती है, तो उसको सीधा करने के लिए जो एक स्टेप है वो सेप्टोप्लास्टी है, जो हमारी बाकी के जो कॉस्मेटिक राइनोप्लास्टी का एक पार्ट बन जाता है। सो अब हम सेप्टोप्लास्टी में क्या करते हैं? सेप्टोप्लास्टी में बेसिकली हम क्या करते हैं कि जो सेप्टम का जो टेढ़ा पोर्शन है उसको निकाल देते हैं। एक एल शेप्ड हम पोर्शन सेप्टम का छोड़ देते हैं, जिससे कि आपकी नाक के ब्रिज को और आपके नाक टिप को सपोर्ट रहे। तो जो टेढ़ा डिविएटेड पोर्शन जो मैंने आपको बताया था कि सेम मोस्ट कॉमनली इट इज इन द फॉर्म ऑफ एन एस शेप और अ सी शेप, उसको निकाल देने से जो एक तरह का नॉस्ट्रिल जो छोटा हो रहा था वो जगह खुल जाती है, पेशेंट की ब्रीदिंग डिफिकल्टी जो है ठीक हो जाती है। अब जब हम इसको कंबाइन कर रहे हैं एक कॉस्मेटिक राइनोप्लास्टी के साथ, तो क्या होता है कि इस सेप्टम को हम लोग यूज कर सकते हैं इन क्रिएटिंग चेंजेस इन द नोज, इन क्रिएटिंग कॉस्मेटिक चेंजेस इन द नोज। सो सपोज द पेशेंट हैज अ वेरी ब्रॉड टिप। अक्सर ब्रॉड टिप का कारण होता है कि जो नेज का जो नोज का जो कार्टिलेज स्ट्रक्चर है वो वीक है। खास करके इंडियन पॉपुलेशन में क्या होता है कि पेशेंट की नाक बहुत चौड़ी होगी और अगर आप हाथ लगा के इस तरीके से दबा के देखेंगे तो नीचे कोई सपोर्ट ही नहीं होगा। तो सेप्टम के इस हिस्से को हम लोग फेंकते नहीं है, इसको हम यूटिलाइज करते हैं आपकी नाक को और खूबसूरत बनाने के लिए। सो वी कैन क्रिएट सपोर्ट इन द नेजल टिप, जिससे कि आपका जो टिप है वो और ज़्यादा रिफाइन लगे और ज़्यादा अच्छी लगे। सो ये एक कारण होता है, ये एक तरीका होता है जिससे कि आपकी सेप्टम को हम यूटिलाइज करते हैं। बाकी बहुत जगह जो सेप्टल कार्टिलेज है, जो आपका जो कार्टिलेज टेढ़ा था सेप्टोप्लास्टी में जो हमने निकाला है, इसको हम यूज कर सकते हैं आपकी नाक की शेप को इम्प्रूव करने के लिए। सो बहुत बार हम टिप में ग्राफ्टिंग करते हैं। यहाँ पे जो कुछ लोगों की जो ये आला होती है ये बहुत वीक होती है, ऐसे पेंशन हो जाती है जब पेशेंट सांस लेता है, तो वहाँ पे उसको आला को सपोर्ट देने के लिए भी वो कार्टिलेज यूज किया जा सकता है। सिमिलरली अगर हमने हम्प निकाला है किसी पेशेंट का, तो जो इरेगुलरिटीज है उन्हें कंसील करने के लिए भी हम उस कार्टिलेज को यूज कर सकते हैं। सो सेप्टल कार्टिलेज इज used for a variety of grafts, to fashion a variety of grafts to give the tip and the nose an overall balanced shape and better proportions. So the septal cartilage becomes very important for us as a good source of cartilage, जिसको हम use करते हैं in cosmetic rhinoplasty. Now the common misconception is that septoplasty will take care of all cosmetic issues. ऐसा नहीं होता है। सेप्टोप्लास्टी से आपका डिविएटेड सेप्टम ठीक हो जाता है, लेकिन जो आपकी डिविएशन है वो हो सकता है आपकी जो आप सपोज आपकी नाक टेढ़ी है और आप सेप्टोप्लास्टी कराते हैं, तो जरूरी नहीं है कि उससे आपकी कंप्लीट डिविएशन ठीक हो जाए, क्योंकि जो टेढ़ापन है बहुत बार बोन्स के लेवल पे भी होता है। तो अगर हमने उसको सीधा करना है देन वी नीड टू डू bony work also, जिसे हम osteotomies कहते हैं. So not every septoplasty is going to give you a straight nose. So you should remember that also. Again, जो सेप्टोप्लास्टी जब हम करते हैं, ज्यादातर सेप्टोप्लास्टी अगर प्योर सेप्टोप्लास्टी है बहुत बार ईएनटी सर्जन्स करते हैं, एंड व्हेन वी आर यूजिंग टेक्निक्स टू करेक्ट द शेप ऑफ द नोज इन एडिशन टू द डिविएटेड सेप्टम, यूजुअली ये प्लास्टिक सर्जन्स करते हैं. सो if you're wanting to go for cosmetic corrections along with correction of the septum, it is advisable to consult a plastic surgeon, जो क्या करेगा कि आपके सेप्टम को भी सीधा कर देगा एंड उसके साथ साथ जो भी आपके टिप में आप चेंजेस चाह रहे हैं या आप चाह रहे हैं कि आपका जो नेजल ब्रिज है वो बेटर हो जाए, अगर हम्प है वो निकल जाए, अगर बहुत बैठी हुई नाक है then the bridge becomes better, then it is better to go to a plastic surgeon who will do a combination of these procedures of septoplasty along with a cosmetic rhinoplasty and give you a better nose. So many times patients come to me who have undergone a septoplasty and they still are not happy with the nose. उस टाइम प्रॉब्लम क्या होती है कि बिकॉज सेप्टम जो है वो यूज निकाल दिया गया होता है, ईएनटी सर्जन्स जिस आपका जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम ठीक करने के लिए जो टेढ़ा पोर्शन ऑफ सेप्टम जो है वो यूजुअली ईएनटी सर्जन्स निकाल के फेंक देते हैं. तो अगर आप इसके बाद हमारे पास आते हैं कि हमें कुछ कॉस्मेटिक करेक्शंस चाहिए, तो प्रॉब्लम ये आती है कि अब क्योंकि हमारे पास सेप्टल कार्टिलेज नहीं है तो हमें और सोर्सेज ऑफ कार्टिलेज देखने पड़ते हैं. सो if you have to perform a rhinoplasty in a patient who previously has had a septoplasty done,
then we need alternate sources of cartilage. तो हमें कान का कार्टिलेज लेना पड़ सकता है जिसे हम कॉन्क्रिल कार्टिलेज कहते हैं. हमें कुछ केसेस में रिब का कार्टिलेज भी लेना पड़ता है जिसे हम कॉस्टल कार्टिलेज कहते हैं. सो because the septal cartilage is no longer available after a septoplasty, now we require other forms of other sources of cartilage, which is either the ear cartilage or the rib cartilage to give shape to the nose. So in the first go, if you want cosmetic corrections also, then don't go in just for a septoplasty, but meet a plastic surgeon, discuss your cosmetic concerns, and go for a procedure which combines septoplasty along with other things like आपके टिप प्लास्टी या आपका nasal bridge correction या आपके nostril की flaring ठीक करना. ये सब जो है इकट्ठे करा जाना better है, because in that case we can use your septum to fashion a lot of grafts which give an improved shape to the nose. अगेन जो सेप्टल कार्टिलेज है वो बहुत काम आता है किसमें, आपके अगर आपके ब्रीदिंग इश्यूज हैं, आपके बहुत सारे लोगों में क्या होता है कि यहाँ की जो एक इंटरनल वाल्व होता है वो पिंच्ड होता है, उसको भी जो सेप्टोप्लास्टी से जो हम कार्टिलेज हार्वेस्ट करते हैं उसको यूज करके वी कैन पुट इन समथिंग कॉल्ड स्प्रेडर ग्राफ्स देयर, जिससे कि आपकी ब्रीदिंग प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व हो जाती है, वो ऑल इम्प्रूव हो जाती है. सो whenever we are doing septoplasty in combination with a cosmetic procedure, the septum is not only removed, but also the cartilage which is obtained from the septum is utilized to fashion grafts and improve both the function and the shape of the nose. So it is a combination where we're using cosmetic techniques like tiplasty or creating a better nasal bridge and a nasal dorsum, along with taking care of the breathing issue. Now जो recovery है, so अभी कुछ दिनों पहले हमने एक सर्जरी की थी जिसमें पेशेंट की सेप्टोप्लास्टी पहले हो चुकी थी. So the patient in the recovery period told me कि डॉक्टर I thought मेरी cosmetic rhinoplasty की recovery भी बहुत fast होने वाली है. So जो रिकवरी पीरियड है इन सेप्टोप्लास्टी इज क्वाइट क्विक, बिकॉज हम क्या करते हैं कि आपके जो जो कट्स होते हैं वो अंदर होते हैं सारे के सारे, और यूजुअली सेप्टोप्लास्टी में सिर्फ और सिर्फ आपका सेप्टम निकाला जाता है, बाकी आपके टिप पे कोई काम नहीं किया गया होता, कोई एक्सटर्नल कट्स नहीं होते. सो जो स्वेलिंग वगैरह है सेप्टोप्लास्टी में जल्दी सबसाइड करती है. सो विद इन अबाउट अ वीक्स टाइम एवरीथिंग इज फाइन. बट अगर हम राइनोप्लास्टी कर रहे हैं जिसमें सेप्टोप्लास्टी के अलावा हमने कुछ और चेंजेस भी किए हैं, तो हीलिंग पीरियड जो है जाहिर सी बात है थोड़ा सा और लंबा हो जाता है. सो इफ यू आर डूइंग अ सेप्टोप्लास्टी अलोंग विद से टिपप्लास्टी, और एज आई सेड कि हम इस नेजल ब्रिज को नैरो कर रहे हैं या उठा रहे हैं या हम्प निकाल रहे हैं, तो जो स्वेलिंग है वो थोड़ा ज़्यादा टाइम रहती है. सो दैट इज समथिंग विच यू हैव टू अंडरस्टैंड, दैट द रिकवरी फेज फ्रॉम अ राइनोप्लास्टी is going to be a little longer than a plain septoplasty where everything is internal and all we have done is to take out the deviated septum. So जहाँ पे septoplasty की recovery is usually a week, in rhinoplasty where we have done a tip job also, say the initial swelling might stay for about almost 2 to 3 weeks and results keep getting better and better for about 6 months to 1 year. Especially जब हम टिप की बात करते हैं तो रिजल्ट्स जो है इम्प्रूव होते चले जाते हैं. दैट इज व्हाई you have to understand that the recovery process is going to be a little delayed, and you need to plan your schedule accordingly when you're planning a rhinoplasty which involves septoplasty along with cosmetic corrections. Now the duration of surgery is also a little different. So when you're doing a septoplasty only, then it is a short duration procedure. It takes about 45 minutes to 1 hour. However, when you're doing a rhinoplasty, which can involve other techniques along with the septoplasty, then depending upon the kind of correction required, depending upon the the types of the problem in the nose which you're trying to fix, this can vary anything in between say 2 hours to even in some cases 4 hours. So the duration of surgery is also longer when we're doing a rhinoplasty rather than just a septoplasty in which we're just addressing the septum. Also जो आपकी जो as I said, in some cases rhinoplasty might also require कि हम लोग बाहर पे भी कहीं से कार्टिलेज लें. सपोज ईयर कार्टिलेज ले रहे हैं या फिर हम रिब कार्टिलेज ले रहे हैं. There are also patients in which
सेप्टम तो प्रेजेंट होता है, सेप्टम टेढ़ा होता है, लेकिन जब हम सेप्टोप्लास्टी करते हैं, the cartilage which we have is not sufficient to create all the grafts which we desire. So in such patients जिनका जो सेप्टम है वो बहुत वीक है, हम उन केसेस में alternate sources of cartilage भी लेते हैं. Though most of the times, I would say in 80% of patients, if you have a good septum, we don't require any alternate sources of cartilage. The septum provides an excellent source of cartilage for various cosmetic changes we need to bring about in the nose. So most of the times, rhinoplasty, as I said, involves harvesting the septum, and it involves using the septum in some form or the other. A septoplasty, on the other hand, is simply a correction of the deviated septum. So, septoplasty would be a pure septoplasty is usually done by ENT surgeons, but if you're going for some corrections in the shape of the nose, in the shape of the nasal tip, or in the shape of the bridge of the nose, then it is better to have a consult with the plastic surgeon who can take care of both the things in one go, and also give you the added advantage that आपका जो सेप्टम का कार्टिलेज है वो यूज हो जाता है, एंड किसी और कार्टिलेज सोर्स की जरूरत नहीं पड़ती. सो यू डोंट हैव टू गो एंड टेक द कॉन्टल कार्टिलेज, यू डोंट हैव टू गो एंड टेक द रिब. So that is why, as I said, septoplasty, when combined with other changes, becomes a longer procedure. उसका recovery भी थोड़ा सा लंबा होता है. Now, the precautions जो septoplasty के बाद हैं या rhinoplasty के बाद हैं वो almost the same है. So you'll be asked to refrain from strenuous activities for a period of 4 to 6 weeks. तो अगर आप जिम जाते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, या आप स्विमिंग करते हैं, आप से बाइकिंग करते हैं, तो ये सब एक्टिविटीज जो है आपने 6 वीक्स तक नहीं करनी है. सो वेदर वी डूइंग जस्ट अ सेप्टोप्लास्टी और वी डूइंग अ राइनोप्लास्टी अलोंग विद द सेप्टोप्लास्टी, आपको ये चीजें अवॉइड करनी है. बाकी जो ऐसे हीलिंग प्रोसेस जो है, इट्स अ लिटिल क्विकर इन अ सेप्टोप्लास्टी and it will take a little longer in a rhinoplasty. Both surgeries are performed under general anesthesia and both surgeries are day care surgeries. So even in a rhinoplasty, अगर हमने बाकी सारी जो मैनिपुलेशन जैसे मैंने आपको बताया कि टिप को शेप दी है या डॉसन को हमने ठीक किया है, नेजल ब्रिज को ठीक किया है, तो भी जो डिस्चार्ज होता है वो सेम डे डिस्चार्ज होता है. आपकी जो नेजल पैकिंग है, अगेन जो नाक है वो पैक्ड रहती है, एंड if you're doing a septoplasty, then depending on the the kind of septoplasty, 2 to 3 days की nasal packing रह सकती है. And then when we're doing a cosmetic rhinoplasty also, as I said, in most of the cases हम सेप्टम को हार्वेस्ट कर रहे होते हैं, सेप्टम को यूज कर रहे होते हैं, तो यूजुअली नेजल पैक्स जो है 48 आवर्स के लिए नाक जो है आपकी बंद रहती है, आपको मुंह से सांस लेनी होती है. So you should expect some amount of congestion in the nose. बहुत कॉमन होता है कि हमने राइनोप्लास्टी की, सेप्टोप्लास्टी की, और थोड़ा सा पेशेंट को कंजेशन सा फील होता है, जुकाम सा फील होता है, ये नॉर्मल है, जिसके लिए हम डिकंजेस्टेंट ड्रॉप्स पेशेंट को डालने को बोलते हैं. So this can continue for a period of about 1 month after the rhinoplasty or the septoplasty. And there is no restriction in performing your routine activities. Most people are back to work within 1 week following a rhinoplasty or a septoplasty, and there is nothing like a period of bed rest. जो पेशेंट बहुत बार मुझे बोलते हैं कि डॉक्टर कितनी दिन की बेड रेस्ट होगी, सो ऐसा कोई बेड रेस्ट नहीं होता है, ना तो सेप्टोप्लास्टी में ना ही राइनोप्लास्टी में. सो यू फ्री टू मूव अराउंड, and I always tell my patients that the quicker you get back to your normal routine, the better. You can always wear a mask and go to work if that's needed. And if you have something like a work from home schedule, like many people have these days, then you can even start resuming your work maybe around day 3 of surgery, because it's not really a painful surgery. Whether we do a septoplasty or we do a cosmetic rhinoplasty, the pain factor is not all that high. So you can expect a quick recovery, and people who are working on systems, people who are working online, they can easily resume work by day 3 or day 4. So there's not ऐसा भी कोई बहुत लंबा चौड़ा recovery period नहीं होता है in both these procedures. Now, as I said, results may a difference again. So when we're doing a septoplasty, maybe within 3 weeks to 1 month, you'll be absolutely fine. आपकी breathing बिल्कुल normal हो चुकी होगी, आपकी nasal congestion जा चुकी होगी. लेकिन अगर आप cosmetic rhinoplasty कर रहे हैं, especially अगर हम टिप में कोई changes कर रहे हैं, तो the person needs to understand कि फिर results आने में वक्त लगता है. So I always tell my patients the tip is going to look thick for at least 3 to 4 weeks, and maybe you will start appreciating the changes जो हमने जो किए हैं, surgically achieve किए हैं. Maybe at about, I would say, a month's time, you'll start appreciating the changes, and these changes keep on getting refined, they keep on getting better for about, I would say,
6 months to even 1 year, because इंडियन स्किन जो होती है खास करके बहुत थिक होती है, एंड इसमें टिप में रिजल्ट्स आने में ऑलमोस्ट 6 महीने लग जाते हैं. सो बी पेशेंट व्हेन यू गॉट अ राइनोप्लास्टी डन, and understand that it's different from all other surgeries. A fact which I keep re-emphasizing, that this is not a breast implant, this is not a liposuction where you have results instantly or within 1 month. This is the kind of surgery, especially your tip, it takes time to narrow down, and you will see improvements very quickly. But you have to understand that the improvements will keep on happening for a period of about 1 year post surgery. So be patient when you're contemplating a rhinoplasty surgery. Don't plan a rhinoplasty too close to an important social event. So don't think of getting a rhinoplasty done if you're going to get married in the next 1 month's time. So this is what I keep telling my patients. आपने अगर कोई भी ऐसा procedure plan करना है, so it should be well in advance. You should plan a rhinoplasty at least 2 months advance to any major social event which you have to attend. So this is more or less what I would want to tell you about septoplasty versus rhinoplasty. And if you have any further questions, please feel free to connect to us. And if you like today's session, please subscribe to our channel. Thank you so much for being with me today. Have a great evening. Bye bye.